ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ध्यायामो धवलावगुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्ठिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनी श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरी। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दमूर्तये नमः। ॐ आत्मारामाग्रगण्यायै नमः। ॐ योगलीनान्तरात्मने नमः। ॐ अन्तर्मुखस्वभावायै नमः। ॐ तुर्यतुङ्गस्थलीजुषे नमः। ॐ प्रभामण्डलवीतायै नमः। ॐ दुरासदमहौजसे नमः। ॐ त्यक्तदिग्वस्तुकालादिसर्वावच्छेदराशये नमः। ॐ सजातीयविजातीयस्वीयभेदनिराकृते नमः। ॐ वाणीबुद्धिविमृग्यायै नमः। ॐ शश्वतव्यक्तवर्त्मने नमः। ॐ नामरूपादिशून्यायै नमः। ॐ शून्यकल्पविभूतये नमः। ॐ षडैश्वर्यसमुद्रायै नमः। ॐ दूरीकृतषडूर्मये नमः। ॐ नित्यप्रबुद्धसंशुद्धनिर्मुक्तात्मप्रभामुचे नमः। ॐ कारुण्याकुलचित्तायै नमः। ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः। ॐ केरलक्ष्मावतीर्णायै नमः। ॐ मानुषस्त्रीवपुर्भृते नमः। ॐ धर्मिष्ठसुगुणानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः। ॐ मातापितृचिराचीर्णपुण्यपूरफलात्मने नमः। ॐ निश्शब्दजननीगर्भनर्गमाद्भुतकर्मणे नमः। ॐ काली श्रीकृष्णसङ्काशकोमलश्यामलत्विषे नमः। ॐ चिरनष्टपुनर्लब्धभार्गवक्षेत्रसम्पदे नमः। ॐ मृतप्रायभृगुक्षेत्रपुनरुत्थिततेजसे नमः। ॐ सौशील्यादिगुणाकृष्टजङ्गमस्थावरालये नमः। ॐ मनुष्यमृगपक्ष्यादसर्वसंसेविताङ्घ्रये नमः। ॐ नैसर्गिकदयातीर्थस्नानक्लिन्नान्तरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनताहस्तसमर्पितनिजान्धसे नमः। ॐ मन्यवक्त्रप्रभुक्तान्नपूरितस्वीयकुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्तसर्वभूतात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षितस्वयं स्वान्तस्फुरत्कृष्णविभूतये नमः। ॐ अच्छिन्नमधुरोदारकृष्णलीलानुसन्धये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखालोकनित्योत्कण्ठितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगाधिदावदग्धान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोकसम्मूर्च्छामुहुःपतितवर्ष्मणे नमः। ॐ सारमेयादिविहितशुश्रूषालब्धबुद्धये नमः। ॐ प्रेमभक्तिबलाकृष्टप्रादुर्भावितशार्ङ्गिणे नमः। ॐ कृष्णालोकमहाह्लादध्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीचन्द्रकमञ्जीरवंशीशोभीस्वभूदृशे नमः। ॐ सार्वत्रकहृषीकेशसान्निध्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरतन्मुखालोकविस्मेरोत्फुल्लदृष्टये नमः। ॐ तत्कान्तियमुनार्स्पर्शह्रष्टरोमाङ्गयष्टये नमः। ॐ अप्रतीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोपलब्धये नमः। ॐ पाणिपद्मसपद्वीणाशोभमानाम्बिकादृशे नमः। ॐ देवी सद्यः स्थिरोधानतापव्यथितचेतसे नमः। ॐ दीनरोदननिर्घोषदीर्णदिक्कर्णवर्त्मने नमः। ॐ त्यक्तान्नपाननिद्रादिसर्वदैहिकधर्मणे नमः। ॐ कुरिरादसमानीतभक्ष्यपोषितवर्ष्मणे नमः। ॐ वीणानिष्यन्दिसङ्गीतलाडितश्रुतिनालये नमः। ॐ अपारपरमानन्दलहरीमग्नचेतसे नमः। ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः। ॐ शान्तरूपामृतझरीपारणानिर्वृतात्मने नमः। ॐ शारदास्मारकाशेषस्वभावगुणसम्पदे नमः। ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रेयशारदोभयमूर्तये नमः। ॐ तन्नाटकाभिनयननित्यरङ्गयितात्मने नमः। ॐ चान्द्रेयशारदाकेळीकल्लोलितसुधाब्धये नमः। ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यरंहसे नमः। ॐ भूयः प्रत्यवरुद्धार्षदिव्यसंस्कारराशये नमः। ॐ अप्राकृताद्भुतानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः।
ॐ ऐश्वर्यवीर्यकीर्तिश्रीज्ञानवैराग्यवेश्मने नमः। ॐ उपात्तबालगोपालवेषभूषाविभूतये नमः। ॐ स्मेरस्निग्धकटाक्षायै नमः। ॐ स्वैराध्युषितवेदये नमः। ॐ पिञ्छकुण्डलमञ्जीरवंशिकाकिङ्किणीभृते नमः। ॐ भक्तलोकाखिलाभीष्टपूर्णप्रीणनेच्छवे नमः। ॐ पीठारूढमहादेवी भावभास्वरमूर्तये नमः। ॐ भूषणाम्बरवेषश्रीदीप्यमानाङ्गयष्टये नमः। ॐ सुप्रसन्नमुखाम्भोजवराभयदपाणये नमः। ॐ किरीटरशनाकर्णपूरस्वर्णपटीभृते नमः। ॐ जिह्वालेढमहारोगीभीभत्सव्रणितत्वचे नमः। ॐ त्वग्रोगध्वंसनिष्णातगौराङ्गापरमूर्तये नमः। ॐ स्तेयहिंसासुरापानाद्यशेषाधर्मविद्विषे नमः। ॐ त्यागवैराग्यमैत्र्यादिसर्वसद्वासनापुषे नमः। ॐ पादाश्रितमनोरूढदुःसंस्काररहोमुषे नमः। ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तगुहार्जुषे नमः। ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः। ॐ सुभाषितसुधामुचे नमः। ॐ अमृतानन्दमय्याख्याजनकर्णपुटस्पृशे नमः। ॐ तृप्तदत्तविरक्तायै नमः। ॐ नम्रार्पितबुभुक्षवे नमः। ॐ उत्सृष्टभोगिसङ्गायै नमः। ॐ योगिसङ्गरिरंसवे नमः। ॐ अभिनन्दितदानादिशुभकर्माभिवृद्धये नमः। ॐ अभिवन्दितनिःशेषस्थिरजङ्गमसृष्टये नमः। ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवृत्तये नमः। ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविपिनवृत्तये नमः। ॐ भूयो गुरुकुलावासिशिक्षणोत्सुकमेधसे नमः। ॐ अनेकनैष्ठिकब्रह्मचारिनिर्मातृवेधसे नमः। ॐ शिष्यसङ्क्रामितस्वीयप्रोज्वलद्ब्रह्मवर्चसे नमः। ॐ अन्तेवासिजनाशेषचेष्टापातितदृष्टये नमः। ॐ मोहान्धकारसञ्चारिलोकानुग्राहिरोचिषे नमः। ॐ तमःक्लिष्टमनोवृष्टस्वप्रकाशशुभाशिषे नमः। ॐ भक्तशुद्धां तरङ्गस्थभद्रदीपशिखात्वषे नमः। ॐ सप्रीतिभुक्तभक्तौघन्यर्पितस्नेहसर्पिषे नमः। ॐ शिष्यवर्यसभामध्यध्यानयोगविधित्सवे नमः। ॐ शश्वल्लोकहिताचारमग्नदेहेन्द्रियासवे नमः। ॐ निजपुण्यप्रदानान्यपापादानचिकीर्षवे नमः। ॐ परस्वर्यापनस्वीयनरकप्राप्तिलिप्सवे नमः। ॐ रथोत्सवचलत्कन्याकुमारीमर्त्यमूर्तये नमः। ॐ विमोहार्णविनिर्मग्नभृगुक्षेत्रोजिहीर्षवे नमः। ॐ पुनस्सन्तानितद्वैपायनसत्कुलतन्तवे नमः। ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशाश्वतबन्धवे नमः। ॐ भृगुक्षेत्रसमुन्मीलत्परदैवततेजसे नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्यै नित्यं नमो नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्किताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव
विभावये महेशीम्। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः। ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः। ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः। ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः। ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः। ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः। ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः। ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः। ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः। ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः। ॐ निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। ॐ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः। ॐ कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डितायै नमः। ॐ अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः। ॐ मुखचन्द्रकळङ्गाभमृगनाभिविशेषकायै नमः। ॐ वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिकायै नमः। ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचनायै नमः। ॐ नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजितायै नमः। ॐ ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरायै नमः। ॐ कदम्बमञ्जरीक्लृप्तकर्णपूरमनोहरायै नमः। ॐ ताडङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डलायै नमः। ॐ पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभुवे नमः। ॐ नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदायै नमः। ॐ शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वलायै नमः। ॐ कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षद्दिगन्धरायै नमः। ॐ निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भत्सितकच्छप्यै नमः। ॐ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः। ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः। ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरायै नमः। ॐ कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्वितायै नमः। ॐ रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्वितायै नमः। ॐ कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तन्यै नमः। ॐ नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वय्यै नमः। ॐ लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमायै नमः। ॐ स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रयायै नमः। ॐ अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतट्यै नमः। ॐ रत्नकिङ्किणिकारम्यरचनादामभूषितायै नमः। ॐ कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः। ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः। ॐ इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतोणाभजङ्घिकायै नमः। ॐ गूढगुल्फायै नमः। ॐ कूर्मपृष्ठजैष्णुप्रपदान्वितायै नमः। ॐ नखदीधितसंच्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः। ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः। ॐ सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः। ॐ मराळीमन्दगमनायै नमः। ॐ महालावण्यसेवधये नमः। ॐ सर्वारुणायै नमः। ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः। ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः। ॐ शिवकामेश्वराङ्कस्थायै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः। ॐ सुमेरुमध्यशृङ्गस्थायै नमः। ॐ श्रीमन्नगरनायिकायै नमः। ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः। ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः। ॐ महापद्माटवीसंस्थायै नमः। ॐ कदम्बवनवासिन्यै नमः। ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः। ॐ कामाक्ष्यै नमः। ॐ कामदायिन्यै नमः। ॐ देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः। ॐ भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः। ॐ सम्पत्करीसमारूढसिन्धुरव्रजसेवितायै नमः। ॐ अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृतायै नमः। ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः। ॐ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः। ॐ किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृतायै नमः। ॐ ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगायै नमः। ॐ भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः। ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः। ॐ भण्डपुत्रवधोद्युक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः। ॐ मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषङ्गवधतोषितायै नमः। ॐ विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दितायै नमः। ॐ कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः। ॐ महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः।
ॐ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिण्यै नमः। ॐ कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः। ॐ महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिकायै नमः। ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यकायै नमः। ॐ ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवायै नमः। ॐ हरनेत्राग्निसंदग्धकामसञ्जीवनौषधये नमः। ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः। ॐ कण्ठाधकटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः। ॐ शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिण्यै नमः। ॐ मूलमन्त्रात्मिकायै नमः। ॐ मूलकूटत्रयकळेबरायै नमः। ॐ कुलामृतैकरसिकायै नमः। ॐ कुलसङ्केतपालिन्यै नमः। ॐ कुलाङ्गनायै नमः। ॐ कुलान्तस्थायै नमः। ॐ कौलिन्यै नमः। ॐ कुलयोगिन्यै नमः। ॐ अकुलायै नमः। ॐ समयान्तस्थायै नमः। ॐ समयाचारतत्परायै नमः। ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः। ॐ ब्रह्मग्रन्थिविभेदिन्यै नमः। ॐ मणिपूरान्तरुदितायै नमः। ॐ विष्णुग्रन्थिविभेदिन्यै नमः। ॐ आज्ञाचक्रान्तराळस्थायै नमः। ॐ रुद्रग्रन्थिविभेदिन्यै नमः। ॐ सहस्राराम्बुजारूढायै नमः। ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः। ॐ तडिल्लतासमरुच्यै नमः। ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः। ॐ महाशक्त्यै नमः। ॐ कुण्डलिन्यै नमः। ॐ विसतन्तुतनीयस्यै नमः। ॐ भवान्यै नमः। ॐ भावनागम्यायै नमः। ॐ भवारण्यकुठारिकायै नमः। ॐ भद्रप्रियायै नमः। ॐ भद्रमूर्तये नमः। ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः। ॐ भक्तिप्रियायै नमः। ॐ भक्तिगम्यायै नमः। ॐ भक्तिवश्यायै नमः। ॐ भयापहायै नमः। ॐ शाम्भव्यै नमः। ॐ शारदाराध्यायै नमः। ॐ शर्वाण्यै नमः। ॐ शर्मदायिन्यै नमः। ॐ शाङ्कर्यै नमः। ॐ श्रीकर्यै नमः। ॐ साध्व्यै नमः। ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः। ॐ शातोदर्यै नमः। ॐ शान्तिमत्यै नमः। ॐ निराधारायै नमः। ॐ निरञ्जनायै नमः। ॐ निर्लेपायै नमः। ॐ निर्मलायै नमः। ॐ नित्यायै नमः। ॐ निराकारायै नमः। ॐ निराकुलायै नमः। ॐ निर्गुणायै नमः। ॐ निष्कलायै नमः। ॐ शान्तायै नमः। ॐ निष्कामायै नमः। ॐ निरुपप्लवायै नमः। ॐ नित्यमुक्तायै नमः। ॐ निर्विकारायै नमः। ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः। ॐ निराश्रयायै नमः। ॐ नित्यशुद्धायै नमः। ॐ नित्यबुद्धायै नमः। ॐ निरवध्यायै नमः। ॐ निरन्तरायै नमः। ॐ निष्कारणायै नमः। ॐ निष्कळङ्गायै नमः। ॐ निरुपाधये नमः। ॐ निरीश्वरायै नमः। ॐ नीरागायै नमः। ॐ रागमथनायै नमः। ॐ निर्मदायै नमः। ॐ मदनाशिन्यै नमः। ॐ निश्चिन्तायै नमः। ॐ निरहङ्कारायै नमः। ॐ निर्मोहायै नमः। ॐ मोहनाशिन्यै नमः। ॐ निर्ममायै नमः। ॐ ममताहन्त्र्यै नमः। ॐ निष्पापायै नमः। ॐ पापनाशिन्यै नमः। ॐ निष्क्रोधायै नमः। ॐ क्रोधशमन्यै नमः। ॐ निर्लोभायै नमः। ॐ लोभनाशिन्यै नमः। ॐ निस्संशयायै नमः। ॐ संशयघ्न्यै नमः। ॐ निर्भवायै नमः। ॐ भवनाशिन्यै नमः। ॐ निर्विकल्पायै नमः। ॐ निराबाधायै नमः। ॐ निर्भेदायै नमः। ॐ भेदनाशिन्यै नमः। ॐ निर्नाशायै नमः। ॐ मृत्युमथन्यै नमः। ॐ निष्क्रियायै नमः। ॐ निष्परिग्रहायै नमः। ॐ निस्तुलायै नमः। ॐ नीलचिकुरायै नमः। ॐ निरपायायै नमः। ॐ निरत्ययायै नमः। ॐ दुर्लभायै नमः। ॐ दुर्गमायै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ दुःखहन्त्रे नमः। ॐ सुखप्रदायै नमः। ॐ दुष्टदूरायै नमः। ॐ दुराचारशमन्यै नमः। ॐ दोषवर्जितायै नमः। ॐ सर्वज्ञायै नमः। ॐ सान्द्रकरुणायै नमः। ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः। ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ सद्गतिप्रदायै नमः। ॐ सर्वेश्वर्यै नमः। ॐ सर्वमय्यै नमः। ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः।
ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः। ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः। ॐ मनोन्मन्यै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ महादेव्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ मृडप्रियायै नमः। ॐ महारूपायै नमः। ॐ महापूज्यायै नमः। ॐ महापातकनाशिन्यै नमः। ॐ महामायायै नमः। ॐ महासत्त्वायै नमः। ॐ महाशक्त्यै नमः। ॐ महारत्यै नमः। ॐ महाभोगायै नमः। ॐ महैश्वर्यायै नमः। ॐ महावीर्यायै नमः। ॐ महाबलायै नमः। ॐ महाबुद्ध्यै नमः। ॐ महासिद्ध्यै नमः। ॐ महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः। ॐ महातन्त्रायै नमः। ॐ महामन्त्रायै नमः। ॐ महायन्त्रायै नमः। ॐ महासनायै नमः। ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः। ॐ महाभैरवपूजितायै नमः। ॐ महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिण्यै नमः। ॐ महाकामेशमहिष्यै नमः। ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ चतुष्षष्टिवचाराढ्यायै नमः। ॐ चतुष्षष्टिकलामय्यै नमः। ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगणसेवितायै नमः। ॐ मनुविद्यायै नमः। ॐ चन्द्रविद्यायै नमः। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यगायै नमः। ॐ चारुरूपायै नमः। ॐ चारुहासायै नमः। ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः। ॐ चराचरजगन्नाथायै नमः। ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः। ॐ पार्वत्यै नमः। ॐ पद्मनयनायै नमः। ॐ पद्मरागसमप्रभायै नमः। ॐ पञ्चप्रेतासनासीनायै नमः। ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ चिन्मय्यै नमः। ॐ परमानन्दायै नमः। ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः। ॐ ध्यानध्यातृध्येयरूपायै नमः। ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः। ॐ विश्वरूपायै नमः। ॐ जागरिण्यै नमः। ॐ स्वपन्त्यै नमः। ॐ तैजसात्मिकायै नमः। ॐ सुप्तायै नमः। ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः। ॐ तुर्यायै नमः। ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः। ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः। ॐ ब्रह्मरूपायै नमः। ॐ गोप्त्रे नमः। ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः। ॐ संहारिण्यै नमः। ॐ रुद्ररूपायै नमः। ॐ तिरोधानकर्यै नमः। ॐ ईश्वर्यै नमः। ॐ सदाशिवायै नमः। ॐ अनुग्रहदायै नमः। ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै नमः। ॐ भानुमण्डलमध्यस्थायै नमः। ॐ भैरव्यै नमः। ॐ भगमालिन्यै नमः। ॐ पद्मासनायै नमः। ॐ भगवत्यै नमः। ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः। ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावल्यै नमः। ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः। ॐ सहस्राक्ष्यै नमः। ॐ सहस्रपदे नमः। ॐ आब्रह्मकीटजनन्यै नमः। ॐ वर्णाश्रमविधायिन्यै नमः। ॐ निजाज्ञारूपनिगमायै नमः। ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः। ॐ श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिकायै नमः। ॐ सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिकायै नमः। ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः। ॐ पूर्णायै नमः। ॐ भोगिन्यै नमः। ॐ भुवनेश्वर्यै नमः। ॐ अम्बिकायै नमः। ॐ अनादिनिधनायै नमः। ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः। ॐ नारायण्यै नमः। ॐ नादरूपायै नमः। ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः। ॐ ह्रींकार्यै नमः। ॐ ह्रीमत्यै नमः। ॐ हृद्यायै नमः। ॐ हेयोपादेयवर्जितायै नमः। ॐ राजराजार्चितायै नमः। ॐ राज्ञै नमः। ॐ रम्यायै नमः। ॐ राजीवलोचनायै नमः। ॐ रञ्जन्यै नमः। ॐ रमण्यै नमः। ॐ रस्यायै नमः। ॐ रणत्किङ्किणिमेखलायै नमः। ॐ रमायै नमः। ॐ राकेन्दुवदनायै नमः। ॐ रतिरूपायै नमः। ॐ रतिप्रियायै नमः। ॐ रक्षाकर्यै नमः। ॐ राक्षसघ्न्यै नमः। ॐ रामायै नमः। ॐ रमणलम्पटायै नमः। ॐ काम्यायै नमः। ॐ कामकलारूपायै नमः। ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः। ॐ कल्याण्यै नमः। ॐ जगतीकन्दायै नमः। ॐ करुणारससागरायै नमः। ॐ कलावत्यै नमः। ॐ कलालापायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कादम्बरीप्रियायै नमः। ॐ वरदायै नमः। ॐ वामनयनायै नमः।
ॐ वारुणीमदविह्वलायै नमः। ॐ विश्वाधिकायै नमः। ॐ वेदवेद्यायै नमः। ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः। ॐ विधात्र्यै नमः। ॐ वेदजनन्यै नमः। ॐ विष्णुमायायै नमः। ॐ विलासिन्यै नमः। ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः। ॐ क्षेत्रेश्यै नमः। ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः। ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः। ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः। ॐ विजयायै नमः। ॐ विमलायै नमः। ॐ वन्द्यायै नमः। ॐ वन्दारुजनवत्सलायै नमः। ॐ वाग्वादिन्यै नमः। ॐ वामकेश्यै नमः। ॐ वह्निमण्डलवासिन्यै नमः। ॐ भक्तिमत्कल्पलतिकायै नमः। ॐ पशुपाशविमोचिन्यै नमः। ॐ संहृताशेषपाषण्डायै नमः। ॐ सदाचारप्रवर्तिकायै नमः। ॐ तापत्रयाग्निसंतप्तसमाह्लादनचन्द्रिकायै नमः। ॐ तरुण्यै नमः। ॐ तापसाराध्यायै नमः। ॐ तनुमध्यायै नमः। ॐ तमोपहायै नमः। ॐ चित्यै नमः। ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः। ॐ चिदेकरसरूपिण्यै नमः। ॐ स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्तत्यै नमः। ॐ परायै नमः। ॐ प्रत्यक्षितीरूपायै नमः। ॐ पश्यन्त्यै नमः। ॐ परदेवतायै नमः। ॐ मध्यमायै नमः। ॐ वैखरीरूपायै नमः। ॐ भक्तमानसहंसिकायै नमः। ॐ कामेश्वरप्राणनाड्यै नमः। ॐ कृतज्ञायै नमः। ॐ कामपूजितायै नमः। ॐ शृङ्गाररससम्पूर्णायै नमः। ॐ जयायै नमः। ॐ जालन्धरस्थितायै नमः। ॐ ओड्यानपीठनिलयायै नमः। ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः। ॐ रहोयागक्रमाराध्यायै नमः। ॐ रहस्तर्पणतर्पितायै नमः। ॐ सद्यः प्रसादिन्यै नमः। ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः। ॐ साक्षिवर्जितायै नमः। ॐ षडङ्गदेवतायुक्तायै नमः। ॐ षड्गुण्यपरिपूरितायै नमः। ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः। ॐ निरुपमायै नमः। ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः। ॐ नित्याषोडशिकारूपायै नमः। ॐ श्रीकण्ठार्धशरीरण्यै नमः। ॐ प्रभावत्यै नमः। ॐ प्रभारूपायै नमः। ॐ प्रसिद्धायै नमः। ॐ परमेश्वर्यै नमः। ॐ मूलप्रकृत्यै नमः। ॐ अव्यक्तायै नमः। ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः। ॐ व्यापिन्यै नमः। ॐ विविधाकारायै नमः। ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः। ॐ महाकामेशनयनकुमुदाह्लादकौमुद्यै नमः। ॐ भक्तहार्दतमोभेदभानुमद्भानुसन्तत्यै नमः। ॐ शिवदूत्यै नमः। ॐ शिवाराध्यायै नमः। ॐ शिवमूर्त्यै नमः। ॐ शिवङ्कर्यै नमः। ॐ शिवप्रियायै नमः। ॐ शिवपरायै नमः। ॐ शिष्टेष्टायै नमः। ॐ शिष्टपूजितायै नमः। ॐ अप्रमेयायै नमः। ॐ स्वप्रकाशायै नमः। ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः। ॐ चिच्छक्त्यै नमः। ॐ चेतनारूपायै नमः। ॐ जडशक्त्यै नमः। ॐ जडात्मिकायै नमः। ॐ गायत्र्यै नमः। ॐ व्याहृत्यै नमः। ॐ सन्ध्यायै नमः। ॐ द्विजवृन्दनिषेवितायै नमः। ॐ तत्त्वासनायै नमः। ॐ तस्मै नमः। ॐ तुभ्यं नमः। ॐ अय्यै नमः। ॐ पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः। ॐ निसीममहिम्ने नमः। ॐ नित्ययौवनायै नमः। ॐ मदशालिन्यै नमः। ॐ मदघूर्णितरक्ताक्ष्यै नमः। ॐ मदपाटलगण्डभुवे नमः। ॐ चन्दनद्रवदिग्धाङ्ग्यै नमः। ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः। ॐ कुशलायै नमः। ॐ कोमलाकारायै नमः। ॐ कुरुकुल्लायै नमः। ॐ कुलेश्वर्यै नमः। ॐ कुलकुण्डालयायै नमः। ॐ कौळमार्गतत्परसेवितायै नमः। ॐ कुमारगणनाथाम्बायै नमः। ॐ तुष्ट्यै नमः। ॐ पुष्ट्यै नमः। ॐ मत्यै नमः। ॐ धृत्यै नमः। ॐ शान्त्यै नमः। ॐ स्वस्तिमत्यै नमः। ॐ कान्त्यै नमः। ॐ नन्दिन्यै नमः। ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः। ॐ तेजोवत्यै नमः। ॐ त्रिनयनायै नमः। ॐ लोलाक्षी कामरूपिण्यै नमः। ॐ मालिन्यै नमः। ॐ हंसिन्यै नमः। ॐ मात्रे नमः। ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः। ॐ सुमुख्यै नमः। ॐ नलिन्यै नमः। ॐ सुभ्रुवे नमः। ॐ शोभनायै नमः। ॐ सुरनायकायै नमः। ॐ कालकण्ठ्यै नमः।
ॐ कान्तिमत्यै नमः। ॐ क्षोभिण्यै नमः। ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः। ॐ वज्रेश्वर्यै नमः। ॐ वामदेव्यै नमः। ॐ वयोवस्थाविवर्जितायै नमः। ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः। ॐ सिद्धविद्यायै नमः। ॐ सिद्धमात्रे नमः। ॐ यशस्विन्यै नमः। ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः। ॐ आरक्तवर्णायै नमः। ॐ त्रिलोचनायै नमः। ॐ खट्वाङ्गादिप्रहरणायै नमः। ॐ वदनैकसमन्वितायै नमः। ॐ पायसान्नप्रियायै नमः। ॐ त्वक्स्थायै नमः। ॐ पशुलोकभयङ्कर्यै नमः। ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः। ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः। ॐ अनाहताब्जनिलयायै नमः। ॐ श्यामाभायै नमः। ॐ वदनद्वयायै नमः। ॐ दंष्ट्रोज्ज्वलायै नमः। ॐ अक्षमालादिधरायै नमः। ॐ रुधिरसंस्थितायै नमः। ॐ कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृतायै नमः। ॐ स्निग्धौदनप्रियायै नमः। ॐ महावीरेन्द्रवरदायै नमः। ॐ राकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः। ॐ मणिपूराब्जनिलयायै नमः। ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः। ॐ वज्रादिकायुधोपेतायै नमः। ॐ डामर्यादिभिरावृतायै नमः। ॐ रक्तवर्णायै नमः। ॐ मांसनिष्ठायै नमः। ॐ गुणान्नप्रीतमानसायै नमः। ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः। ॐ लाकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः। ॐ स्वाधिष्ठानाम्बुजगतायै नमः। ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः। ॐ शूलाद्यायुधसम्पन्नायै नमः। ॐ पीतवर्णायै नमः। ॐ अतिगर्वितायै नमः। ॐ मेदोनिष्ठायै नमः। ॐ मधुप्रीतायै नमः। ॐ बन्धिन्यादिसमन्वितायै नमः। ॐ दध्यन्नासक्तहृदयायै नमः। ॐ काकिनीरूपधारिण्यै नमः। ॐ मूलाधाराम्बुजारूढायै नमः। ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः। ॐ अस्थिसंस्थितायै नमः। ॐ अङ्कुशादिप्रहरणायै नमः। ॐ वरदादिनिषेवितायै नमः। ॐ उद्गौदनासक्तचित्तायै नमः। ॐ साकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः। ॐ आज्ञाचक्राब्जनिलयायै नमः। ॐ शुक्लवर्णायै नमः। ॐ षडाननायै नमः। ॐ मज्जासंस्थायै नमः। ॐ हंसवती मुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः। ॐ हरिद्रान्नैकरसिकायै नमः। ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः। ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः। ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः। ॐ सर्वायुधधरायै नमः। ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः। ॐ सर्वतोमुख्यै नमः। ॐ सर्वौदनप्रीतचित्तायै नमः। ॐ याकिण्यम्बास्वरूपिण्यै नमः। ॐ स्वाहायै नमः। ॐ स्वधायै नमः। ॐ अमत्यै नमः। ॐ मेधायै नमः। ॐ श्रुत्यै नमः। ॐ स्मृत्यै नमः। ॐ अनुत्तमायै नमः। ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः। ॐ पुण्यलभ्यायै नमः। ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः। ॐ पुलोमजार्चितायै नमः। ॐ बन्धमोचिन्यै नमः। ॐ बर्बराळकायै नमः। ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः। ॐ विद्यायै नमः। ॐ वेदादिजगत्प्रसुवे नमः। ॐ सर्वव्याधिप्रशमन्यै नमः। ॐ सर्वमृत्युनिवारिण्यै नमः। ॐ अग्रगण्यायै नमः। ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः। ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः। ॐ कात्यायन्यै नमः। ॐ कालहन्त्र्यै नमः। ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः। ॐ ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः। ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः। ॐ मृगाक्ष्यै नमः। ॐ मोहिन्यै नमः। ॐ मुख्यायै नमः। ॐ मृडान्यै नमः। ॐ मित्ररूपिण्यै नमः। ॐ नित्यतृप्तायै नमः। ॐ भक्तनिधये नमः। ॐ नियन्त्र्यै नमः। ॐ निखिलेश्वर्यै नमः। ॐ मैत्र्यादिवासनालभ्यायै नमः। ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ परानिष्ठायै नमः। ॐ प्रज्ञानघनरूपिण्यै नमः। ॐ माध्वीपानालसायै नमः। ॐ मत्तायै नमः। ॐ मातृकावर्णरूपिण्यै नमः। ॐ महाकैलासनिलयायै नमः। ॐ मृणालमृदुदोर्लतायै नमः। ॐ महनीयायै नमः। ॐ दयामूर्त्यै नमः। ॐ महासाम्राज्यशालिन्यै नमः। ॐ आत्मविद्यायै नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ श्रीविद्यायै नमः। ॐ कामसेवितायै नमः। ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः। ॐ त्रिकूटायै नमः।
ॐ कामकोटिकायै नमः। ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः। ॐ शिरस्थितायै नमः। ॐ चन्द्रनिभायै नमः। ॐ भालस्थायै नमः। ॐ इन्द्रधनुःप्रभायै नमः। ॐ हृदयस्थायै नमः। ॐ रविप्रख्यायै नमः। ॐ त्रिकोणान्तरदीपिकायै नमः। ॐ दाक्षायण्यै नमः। ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः। ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः। ॐ दरान्दोलितदीर्घाक्ष्यै नमः। ॐ दरहासोज्ज्वलन्मुख्यै नमः। ॐ गुरुमूर्तये नमः। ॐ गुणनिधये नमः। ॐ गोमात्रे नमः। ॐ गुहजन्मभुवे नमः। ॐ देवेश्यै नमः। ॐ दण्डनीतस्थायै नमः। ॐ दहराकाशरूपिण्यै नमः। ॐ प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजितायै नमः। ॐ कलात्मिकायै नमः। ॐ कलानाथायै नमः। ॐ काव्यालापविनोदिन्यै नमः। ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः। ॐ आदिशक्त्यै नमः। ॐ अमेयायै नमः। ॐ आत्मने नमः। ॐ परमायै नमः। ॐ पावनाकृतये नमः। ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः। ॐ दिव्यविग्रहायै नमः। ॐ क्लींकार्यै नमः। ॐ केवलायै नमः। ॐ गुह्यायै नमः। ॐ कैवल्यपददायिन्यै नमः। ॐ त्रिपुरायै नमः। ॐ त्रिजगद्वन्द्यायै नमः। ॐ त्रिमूर्त्यै नमः। ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः। ॐ त्र्यक्षर्यै नमः। ॐ दिव्यगन्धाढ्यायै नमः। ॐ सिन्दूरतिलकाञ्चितायै नमः। ॐ उमायै नमः। ॐ शैलेन्द्रतनयायै नमः। ॐ गौर्यै नमः। ॐ गन्धर्वसेवितायै नमः। ॐ विश्वगर्भायै नमः। ॐ स्वर्णगर्भायै नमः। ॐ अवरदायै नमः। ॐ वागधीश्वर्यै नमः। ॐ ध्यानगम्यायै नमः। ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः। ॐ ज्ञानदायै नमः। ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः। ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः। ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः। ॐ लोपामुद्रार्चितायै नमः। ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। ॐ अदृश्यायै नमः। ॐ दृश्यरहितायै नमः। ॐ विज्ञात्रे नमः। ॐ वेद्यवर्जितायै नमः। ॐ योगिन्यै नमः। ॐ योगदायै नमः। ॐ योग्यायै नमः। ॐ योगानन्दायै नमः। ॐ युगन्धरायै नमः। ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सर्वाधारायै नमः। ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः। ॐ सदसद्रूपधारिण्यै नमः। ॐ अष्टमूर्त्यै नमः। ॐ अजाजैत्र्यै नमः। ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः। ॐ एकाकिन्यै नमः। ॐ भूमरूपायै नमः। ॐ निर्द्वैतायै नमः। ॐ द्वैतवर्जितायै नमः। ॐ अन्नदायै नमः। ॐ वसुदायै नमः। ॐ वृद्धायै नमः। ॐ ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिण्यै नमः। ॐ बृहत्यै नमः। ॐ ब्राह्मण्यै नमः। ॐ ब्राह्म्यै नमः। ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः। ॐ बलिप्रियायै नमः। ॐ भाषारूपायै नमः। ॐ बृहत्सेनायै नमः। ॐ भावाभावविवर्जितायै नमः। ॐ सुखाराध्यायै नमः। ॐ शुभकर्यै नमः। ॐ शोभनासुलभागत्यै नमः। ॐ राजराजेश्वर्यै नमः। ॐ राज्यदायिन्यै नमः। ॐ राज्यवल्लभायै नमः। ॐ राजत्कृपायै नमः। ॐ राजपीठनिवेशितनिजाश्रितायै नमः। ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ कोशनाथायै नमः। ॐ चतुरङ्गबलेश्वर्यै नमः। ॐ साम्राज्यदायिन्यै नमः। ॐ सत्यसन्धायै नमः। ॐ सागरमेखलायै नमः। ॐ दीक्षितायै नमः। ॐ दैत्यशमन्यै नमः। ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः। ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः। ॐ सावित्र्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः। ॐ देशकालापरिच्छिन्नायै नमः। ॐ सर्वगायै नमः। ॐ सर्वमोहिन्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ शास्त्रमय्यै नमः। ॐ गुहाम्बायै नमः। ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः। ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः। ॐ सदाशिवपतिव्रतायै नमः। ॐ सम्प्रदायेश्वर्यै नमः। ॐ साधुने नमः। ॐ यै नमः। ॐ गुरुमण्डलरूपिण्यै नमः। ॐ कुलोत्तीर्णायै नमः। ॐ भगाराध्यायै नमः। ॐ मायायै नमः। ॐ मधुमत्यै नमः। ॐ मह्यै नमः। ॐ गणाम्बायै नमः। ॐ गुह्यकाराध्यायै नमः। ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः। ॐ गुरुप्रियायै नमः। ॐ स्वतन्त्रायै नमः। ॐ सर्वतन्त्रेश्यै नमः। ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः।
ॐ सनकादिसमाराध्यायै नमः। ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः। ॐ चित्कलायै नमः। ॐ आनन्दकलिकायै नमः। ॐ प्रेमरूपायै नमः। ॐ प्रियङ्कर्यै नमः। ॐ नामपारायणप्रीतायै नमः। ॐ नन्दिविद्यायै नमः। ॐ नटेश्वर्यै नमः। ॐ मिथ्याजगदधिष्ठानायै नमः। ॐ मुक्तिदायै नमः। ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः। ॐ लास्यप्रियायै नमः। ॐ लयकर्यै नमः। ॐ लज्जायै नमः। ॐ रम्भादिवन्दितायै नमः। ॐ भवदावसुधावृष्ट्यै नमः। ॐ पापारण्यदवानलायै नमः। ॐ दौर्भाग्यतूलवातूलायै नमः। ॐ जराध्वान्तरविप्रभायै नमः। ॐ भाग्याब्धिचन्द्रिकायै नमः। ॐ भक्तचित्तकेकिघनाघनायै नमः। ॐ रोगपर्वतदम्भोळये नमः। ॐ मृत्युदारकुठारिकायै नमः। ॐ महेश्वर्यै नमः। ॐ महाकाल्यै नमः। ॐ महाग्रासायै नमः। ॐ महाशनायै नमः। ॐ अपर्णायै नमः। ॐ चण्डिकायै नमः। ॐ चण्डमुण्डासुरनिषूदिन्यै नमः। ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः। ॐ सर्वलोकेश्यै नमः। ॐ विश्वधारिण्यै नमः। ॐ त्रिवर्गदात्र्यै नमः। ॐ सुभगायै नमः। ॐ त्र्यम्बकायै नमः। ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः। ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः। ॐ शुद्धायै नमः। ॐ जपापुष्पनिभाकृत्यै नमः। ॐ ओजोवत्यै नमः। ॐ द्युतिधरायै नमः। ॐ यज्ञरूपायै नमः। ॐ प्रियव्रतायै नमः। ॐ दुराराध्यायै नमः। ॐ दुराधर्षायै नमः। ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः। ॐ महत्यै नमः। ॐ मेरुनिलयायै नमः। ॐ मन्दारकुसुमप्रियायै नमः। ॐ वीराराध्यायै नमः। ॐ विराड्रूपायै नमः। ॐ विरजसे नमः। ॐ विश्वतोमुख्यै नमः। ॐ प्रत्यग्रूपायै नमः। ॐ पराकाशायै नमः। ॐ प्राणदायै नमः। ॐ प्राणरूपिण्यै नमः। ॐ मार्ताण्डभैरवाराध्यायै नमः। ॐ मन्त्रिणीन्यस्तराजधुरे नमः। ॐ त्रिपुरेश्यै नमः। ॐ जयत्सेनायै नमः। ॐ निस्त्रैगुण्यायै नमः। ॐ परापरायै नमः। ॐ सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः। ॐ सामरस्यपरायणायै नमः। ॐ कपर्दिन्यै नमः। ॐ कलामालायै नमः। ॐ कामदुघे नमः। ॐ कामरूपिण्यै नमः। ॐ कलानिधये नमः। ॐ काव्यकलायै नमः। ॐ रसज्ञायै नमः। ॐ रससेवधये नमः। ॐ पुष्टायै नमः। ॐ पुरातनायै नमः। ॐ पूज्यायै नमः। ॐ पुष्करायै नमः। ॐ पुष्करेक्षणायै नमः। ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः। ॐ परस्मै धाम्ने नमः। ॐ परमाणवे नमः। ॐ परात्परायै नमः। ॐ पाशहस्तायै नमः। ॐ पाशहन्त्रे नमः। ॐ परमन्त्रविभेदिन्यै नमः। ॐ मूर्तायै नमः। ॐ अमूर्तायै नमः। ॐ अनित्यतृप्तायै नमः। ॐ मुनिमानसहंसिकायै नमः। ॐ सत्यव्रतायै नमः। ॐ सत्यरूपायै नमः। ॐ सर्वान्तर्यामिण्यै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ ब्रह्माण्यै नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ जनन्यै नमः। ॐ बहुरूपायै नमः। ॐ बुधार्चितायै नमः। ॐ प्रसवित्र्यै नमः। ॐ प्रचण्डायै नमः। ॐ आज्ञायै नमः। ॐ प्रतिष्ठायै नमः। ॐ प्रकटाकृत्यै नमः। ॐ प्राणेश्वर्यै नमः। ॐ प्राणदात्र्यै नमः। ॐ पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः। ॐ विशृङ्खलायै नमः। ॐ विविक्तस्थायै नमः। ॐ वीरमात्रे नमः। ॐ वियत्प्रसुवे नमः। ॐ मुकुन्दायै नमः। ॐ मुक्तिनिलयायै नमः। ॐ मूलविग्रहरूपिण्यै नमः। ॐ भावज्ञायै नमः। ॐ भवरोगघ्न्यै नमः। ॐ भवचक्रप्रवर्तिन्यै नमः। ॐ छन्दसारायै नमः। ॐ शास्त्रसारायै नमः। ॐ मन्त्रसारायै नमः। ॐ तलोदर्यै नमः। ॐ उदारकीर्तये नमः। ॐ उद्दामवैभवायै नमः। ॐ वर्णरूपिण्यै नमः। ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिन्यै नमः। ॐ सर्वोपनिषदुद्घुष्टायै नमः। ॐ शान्त्यतीतकलात्मिकायै नमः। ॐ गम्भीरायै नमः। ॐ गगनान्तस्थायै नमः। ॐ गर्वितायै नमः। ॐ गानलोलुपायै नमः। ॐ कल्पनारहितायै नमः। ॐ काष्ठायै नमः। ॐ अकान्तायै नमः। ॐ कान्तार्धविग्रहायै नमः। ॐ कार्यकारणनिर्मुक्तायै नमः। ॐ कामकेलितरङ्गितायै नमः। ॐ कनत्कनकताटङ्कायै नमः। ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः।
ॐ अजायै नमः ॐ क्षयविनिर्मुक्तायै नमः ॐ मुग्धायै नमः ॐ क्षिप्रप्रसादिन्यै नमः ॐ अन्तर्मुखसमाराध्यायै नमः ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ॐ त्रय्यै नमः ॐ त्रिवर्गनिलयायै नमः ॐ त्रिस्थायै नमः ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः ॐ निरामयायै नमः ॐ निरालम्बायै नमः ॐ स्वात्मारामायै नमः ॐ सुधासृत्यै नमः ॐ संसारपङ्गनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डितायै नमः ॐ यज्ञप्रियायै नमः ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ॐ धर्माधारायै नमः ॐ धनाध्यक्षायै नमः ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ॐ विप्रप्रियायै नमः ॐ विप्ररूपायै नमः ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः ॐ विश्वग्रासायै नमः ॐ विद्रुमाभायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः ॐ अयोनये नमः ॐ योनिनिलयायै नमः ॐ कूटस्थायै नमः ॐ कुलरूपिण्यै नमः ॐ वीरगोष्ठीप्रियायै नमः ॐ वीरायै नमः ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ॐ नादरूपिण्यै नमः ॐ विज्ञानकलनायै नमः ॐ कल्यायै नमः ॐ विदग्धायै नमः ॐ बैन्दवासनायै नमः ॐ तत्त्वाधिकायै नमः ॐ तत्त्वमय्यै नमः ॐ तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः ॐ सामगानप्रियायै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ॐ सव्यापसव्यमार्गस्थायै नमः ॐ सर्वापद्विनिवारिण्यै नमः ॐ स्वस्थायै नमः ॐ स्वभावमधुरायै नमः ॐ धीरायै नमः ॐ धीरसमर्चितायै नमः ॐ चैतन्यार्घ्यसमाराध्यायै नमः ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ॐ सदोदितायै नमः ॐ सदातुष्टायै नमः ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः ॐ दक्षिणाराध्यायै नमः ॐ दरस्मेरमुखाम्बुजायै नमः ॐ कौलिनीकेवलायै नमः ॐ अनर्घ्यकैवल्यपददायिन्यै नमः ॐ स्तोत्रप्रियायै नमः ॐ स्तुतिमत्यै नमः ॐ श्रुतिसंस्तुतवैभवायै नमः ॐ मनस्विन्यै नमः ॐ मानवत्यै नमः ॐ महेश्यै नमः ॐ मङ्गलाकृतये नमः ॐ विश्वमात्रे नमः ॐ जगद्धात्रे नमः ॐ विशालाक्ष्यै नमः ॐ विरागिण्यै नमः ॐ प्रगल्भायै नमः ॐ परमोदारायै नमः ॐ परामोदायै नमः ॐ मनोमय्यै नमः ॐ व्योमकेश्यै नमः ॐ विमानस्थायै नमः ॐ वज्रिण्यै नमः ॐ वामकेश्वर्यै नमः ॐ पञ्चयज्ञप्रियायै नमः ॐ पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिन्यै नमः ॐ पञ्चम्यै नमः ॐ पञ्चभूतेश्यै नमः ॐ पञ्चसङ्ख्योपचारिण्यै नमः ॐ शाश्वत्यै नमः ॐ शाश्वतैश्वर्यायै नमः ॐ शर्मदायै नमः ॐ शम्भुमोहिन्यै नमः ॐ धरायै नमः ॐ धरसुतायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ धर्मिण्यै नमः ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः ॐ लोकातीतायै नमः ॐ गुणातीतायै नमः ॐ सर्वातीतायै नमः ॐ शमात्मिकायै नमः ॐ बन्धूककुसुमप्रख्यायै नमः ॐ बालायै नमः ॐ लीलाविनोदिन्यै नमः ॐ सुमङ्गल्यै नमः ॐ सुखकर्यै नमः ॐ सुवेशाढ्यायै नमः ॐ सुवासिन्यै नमः ॐ सुवासिन्यर्चनप्रीतायै नमः ॐ आशोभनायै नमः ॐ शुद्धमानसायै नमः ॐ बिन्दुदर्पणसन्तुष्टायै नमः ॐ पूर्वजायै नमः ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः ॐ दशमुद्रासमाराध्यायै नमः ॐ त्रिपुराश्रीवशङ्कर्यै नमः ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ॐ ज्ञानगम्यायै नमः ॐ ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ॐ योनिमुद्रायै नमः ॐ त्रिखण्डेश्यै नमः ॐ त्रिगुणायै नमः ॐ अम्बायै नमः ॐ त्रिकोणगायै नमः ॐ अनघायै नमः ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः ॐ वाञ्छितार्थप्रदायिन्यै नमः ॐ अभ्यासातिशयज्ञातायै नमः ॐ षडध्वातीतरूपिण्यै नमः ॐ अव्याजकरुणामूर्तये नमः ॐ अज्ञानध्वान्तदीपिकायै नमः ॐ आबालगोपविदितायै नमः ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनायै नमः ॐ श्रीचक्रराजनिलयायै नमः ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ श्रीशिवायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः
ॐ ललिताम्बिकायै नमः। ॐ ललिताम्बिकायै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.
Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Thank you for joining us. This is our anniversary for MA Center Chicago. It's been 9 years. But well before this center, this ashram began, the devotees in this region were gathering on a regular basis for 20 to 25 years. With each visit Amma made to Chicago, the devotion grew deeper and deeper, and people started coming from around the region, from Minnesota, from Wisconsin, Iowa, Missouri, Indiana, Michigan, Ohio, even Nebraska and Kansas, despite the far distance. Everything must have been reaching a tipping point when Amma blessed the devotees by allowing them to start looking for a property that could serve as an ashram and center in Chicagoland. I'm told that the search team looked at over 100 properties, and it took 3 to 4 years until they found a property in Kane County, a little ways away from the highway and quaint towns like St. Charles, Geneva, and Batavia. They found a property which is now known as Deer Path Equestrian. No joke. The deal fell through, and the team had to start all over again. It really has become an equestrian center. No joke. Well, needless to say, the ashram search team was disappointed after making all that effort, right? At such times, we may feel that something went wrong. Maybe the search team didn't feel like that, but I'm saying as an example for us in our lives, we may feel that something went wrong. What happened? We did everything for Amma. We made our best effort. Why this outcome? Well, little did everybody know, but Amma had bigger plans for them and for the entire region. It was around that time that a devotee who happened to be a realtor also noticed that a property he had considered before had been reduced in price. It was a long shot in many ways. Too expensive, too much land, too many big buildings to maintain, too much deferred maintenance on the buildings, too many spider webs, too many cockroaches, too many leaky roofs. And I'm going to show you a few slides so you can see what we were contending with here. Okay, so if you've been to see Amma's program here in Chicago, you know that the hall, looks better than that now, for sure. So this is now the Darshan Hall, and they were playing volleyball, and they were until COVID came. So very humble facilities. And next we have, there was the President's Mansion in the northeast corner. And actually, if you look closely at it, it doesn't look so impressive. We thought it might be a historical monument, but even the Historical Society said, just knock it down, because it was in a dilapidated condition. So we had this to deal with, and the beautiful girls' dorm. Look at that. This is the condition that the buildings were in the very first year. Okay, how about the boys' dorm? Wow, look at that, with the dead tree in front of it and the leaky roof. There's another shot of it from the backside. Look at that paint job, beautiful. It's now gone. Okay, what else do we have? The admin building, it's a fixer-upper there in the basement, I think.
It's the lower level. It took an army of devotees to clean this all up, and we had so many troubles with it. Yeah. So on top of all that, we had lots of dead trees, which just don't feel very auspicious when you're starting an ashram. Just big trees with no leaves on them in the middle of summer. So we had to contend with all those. I think that's the last one for now. It's slide 7. That's the end, I think, for now. So, of course, these things were challenging for people to accept, but Amma visited the property in 2011, and she herself decided that it was the right place. This is obviously this present ashram. It's not another equestrian center. She told Ron and others to begin the process of all the investigation and due diligence, whatever they call it. But when that team looked at things more deeply, they felt themselves that it was not a good idea. And Ron said that at one point he implored Amma not to buy the property, this property. Amma basically dismissed his objection and said the process should continue. Well, it took nearly a year for that process to be completed. And on May 2nd, 2012, at exactly 1:50 p.m., MA Center USA became the owner of this property, which is over 10 times the size of the one we lost. The one that got away was 1/10 of the size. And this property that MA Center acquired is a place so many people call home today. Even if they don't live here, many people consider it their spiritual home. Since then, 9 years have passed, and things have changed in almost unbelievable ways. I myself was not at all involved until the day before Amma arrived for her first program on this site. And the 3-day program was extremely busy, not to mention stiflingly hot. It was 4th of July weekend. And I was ignorantly blissful as we conducted the inaugural Homa, celebrated Guru Purnima with Amma, and enjoyed the natural beauty here. You can see a few more slides about that. Here's the inaugural Homa, which I had the good fortune of being able to conduct, not knowing what was awaiting me. And in behind you can see the old boys' dorm, and which got demolished later. And what else do we have here? Yes, so Amma is about to arrive for the first program ever in the Chicago ashram. So you can see in the bottom left corner, that looks like somebody familiar. I think she's sitting in the back of the hall today. Isn't that Archita? And little did Gangadhar know that he's just kind of blissfully walking in the bottom right corner of that picture, not knowing that he was going to become, as they say in India, an inmate. Means resident in India, but doesn't mean that in the US, that's for sure. What is the next photo? Amma enters the hall for the very first time. We have some dear devotees there, some who have merged, one who has merged in Amma, and we remember him on this occasion as well. And Amma looks so happy. You go ahead, next one. So the governor gets to meet Amma. I'm not going to say Amma gets to meet the governor, it's the other way around. And Amma is just captivating him with her smile, and he also had many nice things to say afterwards. When the next slide, you can see, he got a nice big hug from Amma. And Ron, when he was quite active at that time, just 9 years, it makes a big difference, of course, but he's happy and doing very well in Maui right now. But this was an occasion to remember. We have the governor, we have the one of the county members and the leader of the Elburn village, and a lot of notable people in the region. And this was the very first evening program in this ashram. Let's see what happens next. Yes, you see, the hall is full of people, and it was
exceedingly hot. If you were there, you'll remember how much we were sweating. And no air conditioning. Now Amma has compassionately allowed us to put this portable thing where we have these big sleeves on the ceiling, and it makes it much cooler. But that was the day. It was a real cooker. And what was next? Guru Purnima. Yes. The only time we've had it here in the ashram, I believe. Yes, because we missed it other times. And it actually, if it looks like I'm melting, I am. and this is actually though, it was so infused with energy that nobody really paid attention to the heat. And then the next picture is the fervor. That was what brought us, enabled us to stay until the end. And look at all these people. This is like in the middle of the night. After Guru Purnima, they're so happy. Okay, that's enough for now. So Amma's first program that year was the pivotal moment, the moment when everyone's vision shifted. This ashram was no longer a neglected property. It had become a place of worship, joy, and pilgrimage. After Devi Bhava was over, I was blissful, as everybody is, and just thinking, okay, this is one stop in the tour, and now we're going to the next stop. After Devi Bhava, Amma turned to me and she says, "You are going to live here now. You are going to live here now." With 7 words, Amma initiated the next phase of my spiritual journey. I went back to Japan for a little while and then came back in August. And end of August, you know what we had if you were there, a Labor Day retreat with Swami Ramakrishnananda ji, which included a session where many of you were participating. You broke into groups in order to share your vision for the future of the ashram. Even though the ashram wasn't even 4 months old then, we did something very cruel, which was we asked everyone to visualize this ashram 20 years from now and to write down and conceptualize all these things. So those are what the next slides are. I'm going to show you those. Here are the unsuspecting the victims. Actually, they were having a great time, very great time. And you'll see the next photo shows them how engrossed everybody was in their discussions. And you can see there's some paper there, big paper on the tables. They each group, and they also kind of mingled in other groups in between, they had to do this 3 times, and they wrote all kinds of ideas and their vision and everything on different pieces of paper. And these are some samples. Next. This is the outcome. I'm sorry you can't really see the details, but people had so many amazing ideas. They were so inspired. I think they had been just waiting for that moment. And then we have another one, some wonderful ideas. This one is Team Utopia, is that what it says? I have to look at it on my screen. Yeah, it's too far away from me. I have to open it. I'm going to get to that 1 second. I want to see it on my own screen so I can. Yeah, Team Utopia, that was the first one. No, Heaven on Earth, Heaven on Earth. Oh yeah, I forgot to tell you, I told each group to come up with a name for their team. So one chose their name, Heaven on Earth, Team Utopia Realization, 20 years, you see, they write it. Permanent residence, bhajans, daily, all these things are happening, right? Daily practice, it's all happening. Next one, Team Purnam, right? Wow, this is like really organized, sustainable community, social services, energy, education. Wow, cool, okay. And now, I would say, most importantly, we had this one. This is my favorite. Actually, I didn't have anything to do while everybody was doing their thing, so I just started drawing on a piece of paper. Do you believe me? I wish you would believe me. Actually, monkey bars, swings,
tree house, you know, all these things, everything but the pool are here now, actually, come to think of it. We have the school and everything. So we have actually achieved even the children's, some of their requests and dreams. So, moving on, Molly Babu was the one who took all these photos, and she must have thought I was completely nuts for telling her to take pictures of every single piece of paper. But recently, I looked at all these photos again, and I identified 56 themes and ideas written there. Looking back at what people wrote then, it is absolutely uncanny how much of their vision has become a reality. Of those 56 themes, 35 have already been achieved. It was supposed to be, yeah, some people are clapping. It was supposed to be a 20-year plan, but in just 9 years, over 60% of their dreams have become true. Though it is a cause for celebration, we have to give credit where credit is needed. All the credit goes to Amma. Without her, none of this would have happened at all. At the very best, we can call ourselves Amma's monkeys, like the monkeys who helped Rama build the bridge to Lanka. But more likely, however, I think we're closer to the chipmunk, who hardly contributed anything at all, but received Rama's grace and blessings anyhow. What more can we ask for than just grace and blessings? That's all we want. So, what things have changed? Just to show you a little bit of the changes physically that have taken place since then, let's see what happened to the girls' dorm. Wow. The South Lodge, look at that. It's just like, again, heaven on earth, right? It seems like that. I mean, of course, there is no heaven on earth. That's only within your own heart. So you can't expect that to be external. But it is actually very inspiring to see that it has been completely cleaned up compared to what it used to look like. And what about the boys? There was a warehouse that most of you probably, didn't see before there was this renovation, but now it's called the event hall, and we have had a number of events there. And also, there's a chance that it might become part of the research center that Amma is planning here in this ashram. So what went from a very dilapidated warehouse has become a first-class building. So we can move on now. In one sense, the dream of a center, an ashram in this region has been amply fulfilled, we could say. On a deeper level, though, this search is nothing new. We have been doing this throughout many, many lifetimes. It is the culmination of the searching across many lifetimes. Over many lifetimes, we have been searching for our spiritual center in our hearts and in our lives. Whether we are aware of it or not, that's really why we all came to meet Amma. An unknown force inside of us was propelling us forward on a search for that center point of our life. Amma's teachings show us that the real goal to find the inner spiritual center is in our heart. The bindu, or the kendra as she calls it. She has said, building your inner connection with the permanent and unchangeable, with God or the self, is the most important thing in life. God is the source, the real center of our life and existence. Everything else is the periphery. Real self-help happens only when you establish your connection with God, the real center, the real bindu. However, we all know that this center is very subtle and difficult to find without practice and keen concentration.
It's like trying to find that drone note amidst a huge symphony. It's there, but very easy to miss. Our daily lives are the training ground for finding that inner center that Amma talks about. We try to remember Amma, we try to at least chant our mantra, or at least do our work with awareness, mindfulness. We try to be patient and humble. But at the same time, our daily lives can be full of distractions and disturbances. To us, they feel like external distractions and disturbances, but in reality, the external ones are only due to the internal ones. We have too much attachment to people, things, and outcomes becoming a certain way. Everything has to be to our liking. In some, we have difficult focusing. Our lives lack focus. This is why it is always extremely helpful to have a physical spiritual center where everyone can gather together with a common focus. Of course, with COVID, it makes it very difficult. But at least virtually we're gathering. And as soon as COVID is over, like Amma said, she's going to dance with all of us. So we will do that here in the ashram when she says it's okay. The very word focus presupposes a center, right? So that could be why Amma herself actively guided us and continues to guide us in the process of developing these centers around the country and around the world. She has said things like, character building is what we get from ashrams and gurukulams. Ashrams and spiritual people will lead you to light and bestow peace and bring tranquility into your life. Try to live in an ashram atmosphere once a week. Try to develop an inner detachment while discharging your worldly duties. Dedicate at least one day in a month to doing only spiritual practices like a vow of silence, japa, and meditation. Spend that day in a calm and quiet atmosphere where you can be away from all the family problems and other worries. This is a reference to the ashrams. In a sense, getting an ashram or a center is the easy part. The real challenge comes afterwards. Why? The problem is that we drag all our old habits with us into the new center. Actually, the center itself is perfect. It's perfect tranquility. There is perfect peace. All you need is one human being to come on the property, and then all that's gone. All of our attachments, possessiveness, restless mind, our ego, our impatience, self-centeredness, all of this can ruin any center, no matter how great the location and facilities may be. There's a quote in the scriptures that says, 2 syllables lead to death and suffering, while 3 syllables lead to immortal bliss. What are those syllables? Mama. Mama, not mama like mother, mama. In Sanskrit it means mine. Mama leads to death and suffering, while na mama or not mine leads to immortal bliss. That mine should be expanded to become ours. This is my commentary on it. And that ours should be expanded to become everybody's. Because once it becomes everybody's, no one person can claim it as mine anymore. This means that the success of any center ultimately depends on the presence of people who are willing to practice this teaching. Na mama. It is not my ashram. It is everybody's ashram. I am not important. Everybody is important. Once someone asked Amma, if the heart is the real center of love, then what makes us move away and get distracted from that point? It's a very good question. If the heart is the real center of love, which we know it is,
She proves that. Then what makes us move away and get distracted from that point? Who in their right mind would want to get distracted from that point? That's precisely it. Amma responds. Basically, we're not in our right mind. Possessiveness. That is it. In other words, attachment. It kills the beauty of that pure experience. Once attachment overpowers, you go astray, and love becomes misery. We mistake attachment for love. Love is the center, and attachment is in the periphery. Be in the center and detach yourself from the periphery. Then the pain will go away. An ashram is also not merely for intellectual knowledge and talk. There's a nice story that shows how Amma teaches her disciples this same truth, which I've shared before, but on this occasion I think it is a really good idea to remember this story. It includes, it's about an interaction between Swami Pranavamrita ji and Amma. In those days, very long time ago, he was Venu. He wasn't even Pranavamrita Chaitanya, so he was wearing white a long time ago. And even then, though, he was so dedicated to his sadhana, especially mantra japa. He was famous for mantra japa. He would do it incessantly, no matter what work was entrusted to him. Amma says that even today. As one thing she, says, you should follow that example, especially about him. And you could always see his lips moving, but because of this, sometimes he would lose awareness of the external world. If we could only chant our mantra that with so much focus. But this would make him a little careless, it is said. And he would sometimes even knock over or break things near him. Now don't use that as an excuse if you do the same thing at home. I was doing my Pranavamrita Swami imitation and I broke the lamp or whatever. And don't try to pull off that. If you want to know what kind of circumstances they were in, here you can see a little picture of him many moons ago. Okay, maybe the early 1980s. Look at how skinny they were. Not just young, but, and they lived in huts. I mean, of course, I lived in a hut like that also, but in those days, it was so much more austere than my early days. Once he told me that we never knew hunger. And I said, how can that be? He said, there was nothing to eat, so we were always hungry, so that was the norm. So it must have been a time like that. Anyhow, moving on. One day, Amma scolded him for not having attention, external attention. She said, son, constant remembrance of God is good, but if you cannot concentrate your mind on the work that you're doing, then don't do it. Go and meditate somewhere. If God is everything, then work is also God. Do your work as worship. You cannot be careless while offering the worship. So in those days, all of the residents had a very, very intimate relationship with Amma, and like Valya Swamiji, big Swamiji, Swami Amrit Swarupananda ji, says that from the very beginning he interacted with Amma as though she were his real mother, just like any child would talk with their mother. That's how he spoke with them. So much freedom they took. So he was sad when he got that scolding. At least that's what we hear. So he started singing a famous song very loudly, a song written by Adi Shankaracharya, which we know as Mano Buddhi, or what is typically known as Nirvanashtakam. The meaning is, if you know, you would know, it's I am neither the mind, the intellect, ego, nor memory, neither ears, nor tongue, nor the senses of smell and sight. So all this very deep philosophy, and in the end is, I am pure awareness, bliss. I am Shiva, Shivoham, Shivoham. So he was singing that at the top of his lungs. And having heard this,
Amma came directly to his hut and opened the door and said, "Son, nothing can be gained if we walk around saying Shivoham," right from the beginning of our sadhana. I guess that must have been the beginning of his sadhana. For the egg to be hatched, it must sit under the mother hen to be incubated for a long time. A beautiful analogy, huh? We all want to be there underneath Amma, getting ready to hatch. But it also means discipline. They hatch because of patiently sitting there for many days. Likewise, a seeker should patiently perform sadhana according to the Guru's instruction. That is where most of us fail. It is not possible to hatch if you just sit chanting Shivoham, Shivoham. What is the use of the chick saying, "I'm a hen," before it's hatched? Wow, you don't find references like this in the scriptures. It is Amma Shastra. Then she proceeded to say, pure devotion is the best. That is the easiest. One should say, Dasoham, Dasoham. I am your servant, I am your servant in the beginning. Shivoham is not something to be proclaimed loudly. It is something to be verified through direct experience. If somebody beats you up, is it possible for you to sit calmly thinking, he's Shiva, and then you chant, oh, Shivoham, Shivoham, Shivoham. If you can chant Shivoham then, go ahead. Otherwise, only chant Dasoham, Dasoham. I'm your servant. Now you understand where I'm going with this story? We should consider that the more non-existent our ego becomes, the more useful we are in Amma's mission of service to the world. So long as we think that I'm something, we cannot help save the world, not save the world. We cannot help serve the world. We can only serve to the extent that we have reduced our attachments. So please permit me to summarize everything by saying that the ashram gives us everything we need in spiritual life. Amma's presence, Amma's grace, Amma's teachings, a place to practice Amma's teachings, the opportunity to participate in all her initiatives, opportunities to serve the world, and so much more. However, I would say that one of the greatest benefits is not a kind of giving at all. It is a taking away. It is a taking away in the sense that as a reflection of Amma, the ashram takes away. The ashram removes all the inner obstacles that keep us from progressing on the spiritual path. That is the most precious thing. Through the ashram, Amma takes away our ego. Amma takes away our selfishness, our fear, our worries, our anger, our jealousy, and so many other vasanas. There's only one precondition though, one very important precondition. We should be willing to let go of those negativities. Unless we consciously use the ashram for that purpose, the opposite can happen. When Amma gives us a chance to discard a negative quality, we may cling to it even more tightly so we don't lose it. Now, who in their right mind would do such a thing? Again, we're all not in our right mind. Because our negativities have become too deeply ingrained in us, and we have come to feel that they are an inseparable part of us. That is why we do it. We might even scold the person who did or said something to us, thinking that he or she is the perpetrator of a nasty deed. Bad boy, bad girl. Inside we think, I don't like that person. In reality though, Amma is working through them. Through everything that happens, not only in the ashram, but in life, but especially in the ashram. She's working through them and everything to help us let go of what we don't need, to help us discard all the negative cargo that is weighing down our soul so much that we can go towards her only very slowly,
Do we want that? Do we want to inch our way to Amma? I don't think so. If we want to run towards Amma, sprint towards Amma, if we want to fly into her arms, we should view the ashrams in this way. This ashram is the place where I get my spiritual workout. Just like I go to the gym to burn off fat, cholesterol, laziness, and physical stagnation, I go to the ashram to burn off my pride, my short temper, my obsession with money, pleasure, praise, recognition, and so many other vasanas. Whatever happens in this ashram is Amma's will, so I won't blame anyone there for anything. Can we do that? I will only focus on my dharma. What else can I do? And my dharma is to love and serve. That's all that matters. That's all I'm going to look at. Nothing else matters. Forgive me for getting a little hot on this topic. But I really feel this is the most important thing about an ashram that it can offer. There are many things in life that we can acquire, but how do we discard and get rid of the things that we don't want, that won't leave us alone even when we try to get rid of them? That requires grace and the Guru's guidance and the Guru's blessings, and that's what the ashram has. So whatever happens, we have to understand that that is part of Amma's grand plan for each and every one of us. May we all live Amma's teachings as much as we can, paying honor to her tireless efforts to help each and every one of us reach the goal of merging her. Om Amriteshwariye Namaha.
തുമ്പിൽ നിൻ നാമം തുടിക്കുമ്പോൾ നേരം തന്നറിയും ഞങ്ങൾ ദിവ്യമാം നേരം തന്നറിയും ഞങ്ങൾ സുകൃതരായ തവ ചരണ സേവക ഞങ്ങളെന്നമ്മേ 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 അമൃതാനന്ദമയി അമ്മേ അമൃതാനന്ദമയി ഞങ്ങൾ മാനസനട തുറന്നു നിന്നു ആത്മവിശുദ്ധിയോടെ ഞങ്ങൾ മാനസനട തുറന്നു നിന്നു ആത്മവിശുദ്ധിയോടെ കീർത്തനമാല ചാത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ കീർത്തനമാല ചാത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ കുഞ്ഞ് കീർത്തനമാല ചാത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ കീർത്തനമാല ചാത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
ലോകസാര പ്രതീകമായി സ്നേഹമസ്വിനലോലയായി ലോകസാര പ്രതീകമായി പ്രേമ സ്നേഹമസ്വിനലോലയായി ലോകസാര പ്രതീകമായി സ്നേഹമസ്വിനലോലയായി ലോകസാര പ്രതീകമായി ഉള്ളിൽ വാനരുളിടുകമ്മേ വിശ്വം പാപതമസിൽ മുങ്ങി മാർത്യർ സ്വാർത്ഥ ഹൃദയരായി വിശ്വം പാപതമസിൽ മുങ്ങി മാർത്യർ സ്വാർത്ഥ വിശ്വം പാപതമസിൽ മുങ്ങി മാർത്യർ സ്വാർത്ഥ ഹൃദയരായി വിശ്വം പാപതമസിൽ മുങ്ങി മാർത്യർ സ്വാർത്ഥ വിത്തമേത്ത ശരങ്ങളേറ്റം സത്യധർമ്മങ്ങളോടൊങ്ങി വിത്തമേത്ത ശരങ്ങളേറ്റം സത്യധർമ്മങ്ങളോടൊങ്ങി ശക്തി ഞങ്ങൾ കേകുകി അന്ധകാരമകറ്റുവാൻ ശക്തി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുതി അന്ധകാരമകറ്റുവാൻ ശക്തി ഞങ്ങൾ കേകുകി അന്ധകാരമകറ്റുവാൻ ശക്തി ഞങ്ങൾ കേൾക്കുതി അന്ധകാരമകറ്റുവാൻ മുക്തിമാർഗ വെളിച്ചം വന്നേ മുക്തിമാർഗ വെളിച്ചം വന്നേ
तव चरण सेवक न्यंगलिन्नम्मे सुकृतराय तव चरण सेवक न्यंगलिन्नम्मे अमृतानमयी अम्मे अमृतानन्दमयी तुंग करी मुख दादू मनिए तू यवर मन मेरे मामनिए तुंग करी मुख दादू मनिए तू यवर मन मेरे मामनिए तू मनिए तू यवर मन मेरे मामनिए माँ सुगनिंगा मन में निलुम मरवा तुम नहीं तुरी भोमे माँ सुगनिंगा मन में निलुम मरवा तुम नहीं तुरी भोमे माँ सुगनिंगा मन में निलुम मरवा तुमने तुरी भोमे माँ सुगनिंगा मन में निलुम मरवा तुमने तुरी भोमे तुंग करी मुख दादू मनिए तू यवर मन मेरे मामनिए
பரிவாய் வந்தால் பிறத்திடுவோம். பற்றரு போலும் உலகில் நீ பரிவாய் வந்தால் பிறத்திடுவோம். பெருமானே உன்னோக்கிருந்தான் நோடியில் நற்கதி வந்திடுமே. பெருமானே உன்னோக்கிருந்தால் நோடியில் நற்கதி வந்திடுமே. துங்கக்கரி முகத்த தூமணியே தூயவர் மனம் நிறை மாமணியே. துங்கக்கரை முகத்து தூமணியே தூயவர் மனம் நிறை மாமணியே. வள்ளியை மிரளா செய்தது போம் எங்களை மிரளா செய்யாமல். வள்ளியை மிரளா செய்தது போல் எங்களை மிரளா செய்யாமல். இனிதே குறைகள் கலைந்த மக்கா இன்னருள் புரிவாய் கணபதியே. இனிதே குறைகள் கல்வனப்போ இன்னரு பரிவாய் கணபதியே. துங்கக்கரி முகத தூமணியே தூயவர் மனம் நிறை மாமணியே. துங்கக்கரை முகத்து தூமணியே தூயவர் மனம் நிறை மாமணியே. துங்கக்கரி முகத தூமணியே தூயவர் மனம் நிறை மாமணியே. துங்கக்கரை முகத்து தூமணியே
Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Hare Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Hare Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Hare Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Chalat Kesha, Tari Pidvasa, Bhajastri Parita, Namaste Mukunda. Chalatvinchakesha, Haritritavasa, Bhajastri Parita, Namaste Mukunda. Chalat Kesha, Tari Pidvasa, Bhajastri Parita, Namaste Mukunda. Chalatvinchakesha, Haritritavasa, Bhajastri Parita, Namaste Mukunda. Ganashama Varna, Manomohananga, Ramakanti Ramya, Namastu Ganesha. Ganashama Varna, Manomohananga, Ramakanta Ramya, Namastu Ganesha. Ganashama Varna, Manomohananga, Ramakanta Ramya, Namastu Ganesha. Ganashama Varna, Manomohananga, Ramakanta Ramya, Namastu Ganesha. Hare Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Hare Krishna Krishna, Kripa Purna Krishna, Hare Krishna Krishna, Namo Bala Krishna. Hare Vasudeva, Prabhu Prema Rupa, Yashoda Tanuja, Shubham Dehi Deva. Hare Vasudeva, Prabhu Prema Rupa, Yashoda Tanuja, Shubham Dehi Deva. Hare Vasudeva, Prabhu Prema Rupa, Yashoda Tanuja, Shubham Dehi Deva. Hare Vasudeva, Prabhu Prema Rupa, Yashoda Tanuja, Shubham Dehi Deva. Jagadvandya Murte, Suragita Kirti, Sadananda Shaure, Dayananda Vande. Jagadvandya Murti, Suragita Kirti, Sadananda Shaure, Dayananda Vande. Jagadvandya Murte, Suragita Kirti, Sadananda Shaure, Dayananda Vande. Jagadvandya Murti, Suragita Kirti, Sadananda Shaure, Dayananda Vande. Deya Rupa Deva, Jara Janmanasha, Mahadeva Sevya, Namo Deva Deva. Jaya Rupa Deva, Jara Janmanasha,
सेव्या नमो देव देवा जय रूप देवा जरा जन्मनाशा महादेव सेव्या नमो देव देवा जय रूप देवा जरा जन्मनाशा महादेव सेव्या नमो देव देवा हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृपा पूर्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नमो बाल 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 कृष्ण जय जय भय भंजिनी जननी भुवन रंजिनी जय 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 भंजिनी जननी भुवन रंजिनी जय जय भय भंजिनी जननी भुवन रंजिनी जय जय भय भंजिनी जननी भुवन रंजिनी
सकल हृदय हारिणी अभयं कुरु मालिनी 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 जयतु जयतु शंकरी जयतु जयतु शुभकरी 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 मलयाचल वासिनी ममता मदशूलिनी मलयाचल वासिनी ममता मदशूलिनी मलयाचल वासिनी ममता मदशूलिनी मलयाचल वासिनी ममता मदशूलिनी जन मन निवारिणी जनन मरण वारिणी जय जय भवतारिणी जनन मरण हारिणी जय जय भवतारिणी जनन मरण वारिणी जय जय भवतारिणी जनन मरण हारिणी जय जय भवतारिणी जयतु जयतु शंकरी जयतु जयतु शुभकरी 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 जयतु शंकरी जयतु जयतु शुभकरी श्वेतांबरधारिणी श्याम मृदुगामिनी श्वेतांबरधारिणी श्यामा मृदुगामिनी श्वेतांबरधारिणी श्याम मृदुगामिनी श्वेतांबरधारिणी श्यामा मृदुगामिनी श्रीशैल विहारिणी शोकाति विनाशिनी श्रीशैल विहारिणी शोकाति विनाशिनी श्रीशैल विहारिणी शोकाति विनाशिनी श्रीशैल विहारिणी शोकाति विनाशिनी जयतु जयतु शंकरी जयतु जयतु शुभकरी 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 जयतु जयतु शंकरी
जयतु जयतु शुभकरी ओंकार स्वरूपिणी ह्रींकार निवासिनी ओंकार स्वरूपिणी ह्रींकार निवासिनी ओंकार स्वरूपिणी ह्रींकार निवासिनी ओंकार स्वरूपिणी ह्रींकार निवासिनी कामेश विनाशिनी काले कुलयोगिनी कामेश विलासिनी काली कुलयोगिनी कामेश विनाशिनी काले कुलयोगिनी कामेश विलासिनी काली कुलयोगिनी जयतु जयतु शंकरी जयतु जयतु शुभकरी 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 मन रे सीख प्रभु का नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरण नित धोना मन रे सीख प्रभु भावो
नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरणन नित धोना। मन रे सीख प्रभु का होना, नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरणन नित धोना। सीख प्रभु का होना, नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरणन नित धोना। जितने विषयों को अपनाया एक भी तेरे काम नाया। जितने विषयों को अपनाया एक भी तेरे काम नाया। जितने विषयों को अपनाया एक भी तेरे काम नाया। जितने विषयों को अपनाया एक भी तेरे काम नाया। जिस जिसको तू मीता समझा, जिस जिसको तू मीठा समझा। जिस जिसको तू मीता समझा। जिस जिसको तू मीठा समझा। उसने तड़पाया। संजय कर कर उमर गवाई। 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 सीख सभी कुछ खोना। मन रे सीख प्रभु का होना, नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरणन नित धोना। बोझ बनी है अभिलाषा है, खींच रही दुख तेरे काए। बोझ बनी है अभिलाषाएं, खींच रही दुख तेरे काए। बोझ बनी है अभिलाषाएं, खींच रही दुख तेरे काए। बोझ बनी है अभिलाषाएं, खींच रही दुख तेरे काए। तू परवश हो कर क्यों रोया। तू परवश हो कर क्यों रोया। तू परवश हो कर क्यों रोया। तू
परवश हो पर क्यों रोया। बांधे स्वयं सीमाएं मुक्ति कहाँ जो कोई नहीं रोके। मुक्ति कहाँ जो तू नहीं रोके। मुक्ति कहाँ जो तू नहीं रोके। मुक्ति कहाँ जो तू नहीं रोके। बीज कर्म का बोना सीख प्रभु का होना। नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरण नित धोना। जगती का हर कारज उसका हर कारज में ध्यान भी उसका। जगती का हर कारज उसका हर कारज में ध्यान भी उसका। जगती का हर कारज उसका हर कारज में ध्यान भी उसका। जगती का हर कारज उसका हर कारज में ध्यान भी उसका। नहीं बनाया गुड़ मिटाए। खुद ही बनाए खुद ही मिटाए। गुड़ ही बनाए गुड़ ही मिटाए। खुद ही बनाए खुद ही मिटाए। देश काल सब उसका तन का रक्षण सरल समाधि। तन का रक्षण सरल समाधि। तन का रक्षण सरल समाधि। रक्षण सरल समाधि। क्या जगना क्या सोना सीख प्रभु का होना। नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरण नित धोना। मन रे सीख प्रभु का होना। नयन में उमड़े गंगा जल से प्रभु चरण नित धोना। प्रभु चरण नित धोना। प्रभु चरण नित धोना। प्रभु चरण नित धोना। प्रभु चरण नित धोना।
Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva
जय जय जननी जय हो तेरी, जय भवतरणी भाग्य विदात्री, जय शिव रमणी माता भवानी, जय भयहरणी देवी महेश्वरी। जय जय जननी जय हो तेरी, जय भवतरणी भाग्य विदात्री, जय शिव रमणी माता भवानी, जय भयहरणी देवी महेश्वरी। जय जय जननी जय हो तेरी, जय भवतरणी भाग्य विदात्री, जय शिव रमणी माता भवानी, जय भयहरणी देवी महेश्वरी। जय जय जननी जय हो तेरी, जय भवतरणी भाग्य विदात्री, जय शिव रमणी माता भवानी, जय भयहरणी देवी महेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय तुम ही मेरा सब कुछ मैया, मुझ पर करना तुम अब करना। तुम ही मेरा सब कुछ मैया, मुझ पर करुणा तुम अब करना। तुम ही मेरा सब कुछ मैया, मुझ पर करुणा तुम अब करना। तुम ही मेरा सब कुछ मैया, मुझ पर करुणा तुम अब करना। तुम सबकी हो प्यारी जननी, दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी जननी, दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी जननी, दूर करो सब संकट जल्दी। तुम सबकी हो प्यारी जननी, दूर करो सब संकट जल्दी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माँ 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 जय माँ। दिव्य महाद्भुत मैया तेरी सृष्टि स्थिति लय रूला। दिव्य महाद्भुत मैया तेरी सृष्टि स्थिति लय रूपी लीला। दिव्य महाद्भुत मैया तेरी सृष्टि स्थिति लय रूपी लीला। दिव्य महाद्भुत मैया तेरी सृष्टि स्थिति लय रूपी लीला। देव मुनीश्वर दास तुम्हारे, दैत्य तुम्हारे बल से हारे। देव मुनीश्वर दास तुम्हारे, दैत्य तुम्हारे बल से हारे। देव मुनीश्वर दास तुम्हारे, दैत्य तुम्हारे बल से हारे। देव मुनीश्वर दास तुम्हारे, दैत्य तुम्हारे बल से हारे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माँ 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 भक्त जनों के कल्पलता समवांछित वर सब देती तो हम। भक्त जनों के कल्पलता समवांछित वर सब देती हो तुम। भक्त जनों के कल्पलता समवांछित वर सब देती हो तुम। भक्त जनों के कल्पलता समवांछित वर सब देती हो तुम। हम सब तेरा नाम पुकारे, दूर करो सब दुख हमारे। हम सब तेरा नाम पुकारे, दूर करो सब दुख हमारे। हम सब तेरा नाम पुकारे, दूर करो सब दुख हमारे। हम सब तेरा नाम पुकारे, दूर करो सब दुख हमारे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माँ 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 जय माँ। जय जय जननी जय हो तेरी, जय
भवतरणी भाग्य विधात्री जय शिवरमणि माता भवानी जय भयहरणी देवी महेशी जय जय जननी जय हो तेरी जय भवतरणी भाग्य विधात्री जय शिवरमणि माता भवानी जय भयहरणी देवी महेशी जय जय जननी जय हो तेरी जय भवतरणी भाग्य विधात्री जय शिवरमणि माता भवानी जय भयहरणी देवी महेशी जय जय जननी जय हो तेरी जय भवतरणी भाग्य विधात्री जय शिवरमणि माता भवानी जय भयहरणी देवी महेशी जय जय माँ जय जय माँ जय 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 माँ 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 जय जय माँ जय जय
Mata Amritanandamayi Janavani Sukadayini Mata Amritanandamayi Mangalakarini Vande Janani Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Sakalagaman Nigamadishucharite Amritanandamayi Nikhilamaya Hara Janani Vande Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Premarasamrita Varshini Mata Amritanandamayi Prema Bhakti Sandayini Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Samadamatayi Mananayatayi Amritanandamayi Satatam mama hridi vasatam devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Pandito dhara nirantara hridaye Amritanandamayi Paramahamsa pada nilaye Devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi He Janani Jani Marana Nivarini Amritanandamayi He Sita Jana Paripalini Jayatam Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Surajana Bhojina Jaya Jagadamba Amritanandamayi Sahaja Samadhi Sudhanye Devi Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Om Jaya Jaya Jagat Janani Vande Amritanandamayi Mangala Arati Mata Bhavani Amritanandamayi Mata Amritanandamayi Mata Amritanandamayi जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी की
Om Amriteshwari Namaha. Let us all take this opportunity to meditate together. As Amma always says, group spiritual practices amplify the power of the sadhana as many times as there are people. So in the mornings, we get to meditate with Amma, the Ma Om meditation and the White Flowers of Peace meditation. Here let us reinfuse the mantra in our breath, in our hearts, with the benefit of many different people watching this at the same time. Though they may be in different places, that intention is still one. And we can go deeper in our mantra japa sadhana by chanting together as a group, even if we are not physically together. So close your eyes, take a few long deep breaths. Check your posture. Try to keep the back and neck relatively straight. With each long, deep breath, feel your body and mind relaxing further and further. Gradually the mind calms down. The thoughts reduce. And our power of concentration increases. We can begin chanting our mantra under our breath, not out loud. But you can move your lips, and naturally the tongue will also move as though making those sounds out loud. If you do not have a mantra from Amma, you may chant mentally, repeat Om Amriteshwari Namaha or Om Namaha, Om Namah Shivaya, or simply Om. Whichever mantra it is, begin to repeat that, increasing your concentration by moving your lips very slightly.
Now, instead of moving your lips, try to chant the mantra, repeat it mentally without moving your lips at all, not even moving your tongue. Just completely visualization that you are chanting, repeating the mantra internally. We will now conclude the meditation with the closing prayers. But afterwards, even for some time, as long as you can, try to repeat that mantra within, without moving your lips or tongue. Try to learn how to do it completely mentally. In that way, it will remain with you throughout the day. Take a deep breath. Om Asato Ma Sadgamaya Om Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. One more long deep breath. And as you exhale, you can slowly open your eyes. Om Amriteshwarye Namaha. Thank you all for joining us on this auspicious occasion. We hope to see you this coming Thursday. And the following Saturday, the bhajans will be from the East Coast ashram in DC. So please join that for your Saturday bhajan fix on that occasion.
And the following weekend, we have something very, very special, which is a international treat with Swami Amrita Swarupanandaji. He'll be in India, and Amma's disciples here in the West will also be presenting some parts of the retreat. So we really encourage you all to participate as much as you can. Looking forward to all of these, and until we meet again, Om Amriteshwarye Namaha.